للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. So, illegal breaking of the fast. There are three options for the penalty. Number one, make one slave free. If this is not available, this is locked. And two options left in Ayah 4, chapter 58. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. The Shahraini Mutatabi'in, the first one, 2 consecutive months fasting. And فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. और फिर third option क्या है? Feed 60 poors. So this is the penalty for illegal breaking of Sowm. Then next, devotional fasting. When to observe this type of fasting? Any specific days you remember? For example, Shaban, before Ramadan, just for the preparation of the month of Ramadan, the Holy Prophet ﷺ used to observe maximum number of days fasting in the month of Shaban. The mother of faithful Amma Aisha Raziyallahu Ta'ala, she says the Holy Prophet ﷺ used to have maximum number of days in fasting, just excluding the days before the beginning of Ramadan, just to save the energy maybe. So it is not recommended just to close days, not to observe fast, but in the middle of Shaban, throughout the entire month, maximum number of days fasting are recommended, but all called nafli, devotional. Okay? And Shawwal, the next month of Ramadan. The Holy Prophet said, one who observe complete month of Ramadan fasting and then add 6 more from the Shawwal, right after the Eid days. Remember, Eid days are excluded. Eid days of Eid al-Adha and 1 day from Eid al-Fitr, these are excluded. Fasting is banned in these days because this is a gift of Allah subhanahu wa ta'ala to eat, drink, enjoy 8 days. So not to observe fast in these days. But once the Eid day passed, then if someone observes 6 more days in Shawwal, then she is equal to 1 year complete fasting reward. ऐसा है जैसे वो पूरा साल उसने रोजे रखे. Because there is calculation behind that actually. 30 days of Ramadan, 6 days of Shawwal. How many? 36. And Allah promised that when you do one single good deed, we shall multiply it in the reward by 10-fold. So one who observes 36 into 10 mean 360. 360 are the complete days of 1 year. So there is calculation behind. The Holy Prophet ﷺ was never been to any mathematician, never been to any university. Whatever he used to say, this was revelation by Allah subhanahu wa ta'ala. This is his miracle. So one who observes these number of fasting, it has great reward. So 6 from Shawwal. Yes. After Eid day. Shawwal. And then Muharram, which is called Ashura Muharram, 10th of Muharram. But 1 more day need to be added before 10 or after. 9 or 10 or 10 or 11. When Holy Prophet ﷺ migrated to Medina, he was informed that the Jews give respect to the 10th of Muharram. On this day, they observe fasting. The Holy Prophet said, we pay more respect to this day. But we are not going to be similar to them, only observe 1 number of day fasting. No, we shall add 1 more day. Okay? So just to show the significance and the uniqueness and distinction of the Islam and its ritual, the Holy Prophet ﷺ doesn't allow to be similar, even in worship, even in good deeds, to the other religion. This is the uniqueness of the Islam. So he suggested to be 1 day more added. So if one who intended to observe fasting on this Ashura Muharram, she need to add 1 more day before or after. Okay? And then Zulhajj. In the first Ashra of Zulhajj, first Ashra means not complete 10 days because 10th Zulhajj is Eid day. Okay? First 9 days of Zulhajj. There is great reward for observing fasting on those days from 1 to 9th of Zulhajj. And specifically the 9th
of Zilhajj, which is called Arfa, Yom Arfa. It has greater reward than the first 8 days. The Holy Prophet said, one who observe fasting on the Yom Arfa, day of Arfa, when all the pilgrims are camping in Arfa days, Allah subhanahu wa ta'ala has greater mercy on the complete universe, and on one who observe fasting 2 consecutive years, 1 year before and 1 year after. Allah subhanahu wa ta'ala forgive all of the sin of this person, man or woman. उसको 2 साल के गुनाहों का कफारा होता है उसका. One who observe fasting on the Yom Arfa. So this is also nafli, devotional, okay, in month of Zilhajj. All days you can observe fasting 1 to 9. Specifically 9 का रिवॉर्ड ज़्यादा है, ठीक है, बाकियों का रिवॉर्ड भी है, ठीक है, बट जो 9 ज़िलहज है विच इज़ कॉल्ड योम अरफा. सो बिकॉज ऑफ अरफा डे उसकी सिग्निफिकेंस और उसका रिवॉर्ड बढ़ जाता है. एंड अय्याम बीज in the middle of every lunar month, 3 days from the middle of every lunar month, 14, 15 and 16. These are the 3 days from every lunar month are highly recommended to observe fasting as nafli or as devotional. Okay? Ayyam is a singular, is a plural to the yom. Yom means din. Bees means white. नूर, enlightened, रोशन. अय्याम बीस मतलब रोशन दिन, बरकत वाले दिन. सो इन द मिडल ऑफ एवरी ल्यूनर मंथ, जो 3 दिन होते हैं, व्हेन द मून इज इन फुल स्विंग, उसकी रोशनी पूरी होती है चांद की. फर्स्ट नाइट से वो निकलना शुरू होते हैं, इन द मिडल में जाके वो फुल स्विंग में हो जाते हैं. व्हेन इट कम्स इन फुल स्विंग, इट हैज़ ग्रेटर रिलेशन विद द 2 थिंग्स. उसका 2 चीज़ों के साथ रिलेशन होता है. नंबर 1, सी शोर के साथ, सी की जो वेव्स होती हैं उनके साथ, वाटर के साथ उसका बड़ा लिंक होता है चांद की किरणों का जो वहाँ से आ रही होती है. नंबर 2, विद द ब्लड रिलेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उसके साथ भी उसका बड़ा रिलेशन होता है. इफ़ यू गॉट अ चांस टू गो सम टाइम इन द सी बैंक, और कभी आपने देखा हो, ठीक है, 2 years पास व्हेन आई वाज इन कराची, लकीली इन दीज डेज वो यही नाइट थी. सो आई गॉट अ चांस टू विजिट कराची पोर्ट. सो इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. मैंने देखा कि पानी जो है ना वो उछल के यूं चांद के साथ मिल रहा है, उसके अंदर इतना उबाल और उछाल आया हुआ है. एंड 1400 years बैक द होली प्रॉफेट सल्लम व्हेन सेड कि इसका इतना रिलेशन है समंदर के पानी के साथ. होली प्रॉफेट नेवर विजिटेड एनी टाइम, कभी उनको समंदर पे जाने का मौका नहीं मिला, नेवर विजिटेड, ठीक है. और वो कह रहे हैं कि इंसान के खून के साथ जदीद साइंस ने उसको प्रूव किया कि इंसान के खून के अंदर उबाल आ रहा होता है. सो रिकमेंडेड टू डू 2 things इन दीज नाइट्स एंड दीज डेज. ये जो अय्याम बीस हैं, 2 चीज़ें इसमें करने की होती हैं. इफ एवरीवन वांट्स टू बी हेल्दी एंड वेल्दी फॉर एवर, फ्री ऑफ एवरी डिजीज, इन वांटेड टू एंजॉय द हेल्थ थ्रू आउट द एंटायर लाइफ, उसको 2 काम करने होते हैं इन 3 दिनों में. Number 1, to do hijama. Hijama is kind of minor operation, cup between the 2 shoulders, just behind the neck. ठीक है, there are 5 places are recommended. सुन्ना places है पूरी body में, ठीक है, but most highly recommended is between the 2 shoulders. Having cup on that, minor operation है, ठीक है. Throughout the developed countries this is habit for the people, but हम चूँकि हमें शौक होता है कि जब तक डॉक्टर को 10-50 हज़ार के टेस्ट नहीं लगवाएंगे तो हमें लगता है कि हमें आराम नहीं मिलेगा. तो हम चूँकि इस साइकी के मालिक हैं, तो इसलिए हमें जो सस्ता और आसान इलाज है, जो सुन्ना इलाज है, हम उससे भागते हैं या हमें पता ही नहीं होता, उसकी अवेयरनेस ही नहीं होती हमें. द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इट क्योर्स 70 डिजीजेस फ्रॉम द बॉडी. इट गिव्स अ गारंटी टू बी प्योर फ्रॉम 70 डिजीज. 70 बीमारियों से शिफा है. व्हेन द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू द नाइट ऑफ मेराज, द होली प्रॉफेट सेड at every step of the skies, every group of the angels, they asked me, they requested me, O Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, when you go back to your ummah, ask them to have hijama. This is the cure of every disease except the death. मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है इसमें. The Prophet used to have this cup of this minor operation throughout his entire life. At least if we could
do this at least when the season is changing, after 3 months, after 6 months. ठीक है, so in order to prevent ourselves from all the seasonal flu or disease or something like that. ठीक है, be very much healthy and wealthy. Actually there is science behind that. ये जो minor operation है, कि बस एक activity for the sake of activity नहीं है. There is medical science says there is spinal cord. जितना आपका ब्लड का जो फ्लू है वो सारा इधर से निकलता है, ठीक है. सो कोई भी बीमारी कहीं पे होती है, डिजीज, तो वो क्यों होती है? ब्लड की थिकनेस की वजह से होती है. व्हेन यू हैव कप हेयर, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन इज वो रवा हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है. अब आपका ब्लड सर्कुलेशन, अनटिल योर ब्लड सर्कुलेशन इज गुड, आपको कभी कोई बीमारी हो सकती नहीं है, ठीक है. सो वो जो जितनी थिकनेस होती है, वो उसी के थ्रू जितने स्पॉट्स होते हैं वो सारे यहाँ से वो सक हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं आपके इधर से, ठीक है. बट उसके लिए डेफिनेटली एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो ये स्पेसिफिक करते हैं, ठीक है. इन पाकिस्तान इन सेवरल सिटीज अवेलेबल. मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं उसके एडवर्टाइज भी कर रहा हूँ आपको, ठीक है, आप समझे ऐसा, ठीक है. सो वो क्या होता है कि बहुत चीप एक क्यूर है, ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, ठीक है. एटलीस्ट माई एक्सपीरियंस इज ग्रेट इन दैट रिगार्ड. सो two things in these ayyam bees. Number one, having hijama, and number two, observing fast in the day hours, ठीक है. नफली रोज़ा इन दिनों में रखना, और जो है वो इसका ये हिजामा लगवाना. हिजामा की जो डेज है वो इसके बाद के हैं, वो है 17, 19 और 21. वो इसके बाद के रोज़ों के दिन ये है, इसके बाद के हिजामा के डेज. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नफली, डिवोशनल, नॉट मैंडेटरी. क्लियर है?